start with the first sum regarding that we have to find out the square root. This is the first method. We'll find out the square root by repeated subtraction. This can be the objective question. It's not so lengthy, but it's quite interesting. It's a repeated subtraction method. Square में हमने देखा था कि we can add the odd numbers. It is like the same. ये वही method है. Repeated subtraction में क्या करना है? So whatever the number is given, we subtract 1 from that number. Whatever the number exists, now we'll subtract 3. That means we have to subtract all the odd numbers from that. So it comes 77. Now from 77, the next odd number, you can see it's 1, 3, 5. I'm writing odd numbers here, 72. कहाँ तक करेंगे? Let me explain you. The next odd number is 7. तो 72 minus 7 करेंगे. So it comes 65. Then 65 minus 9. So that comes 56. 56 minus 11. That comes 45. 45 minus 13. That comes 32. 32 minus 15. That's 1. 17. 17 minus 17. We obtain 0. तो कहां तक करना है? Till we obtain 0 as an answer. So in which step we obtain 0? 9th step. So the given number 81, इसका square root होगा 9. Look at all the numbers which I have subtracted. It is called repeated subtraction method. We are continuously subtract the odd numbers from the answer of the previous subtraction what exists. जो भी नंबर दिया है उसको सबसे पहले 1 में से subtract करना है. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर 1, जो भी आंसर मिले उसको उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन अगेन द आंसर विच वी ऑब्टेन वी सब्ट्रैक्ट 5. अगेन व्हाट वी ऑब्टेन वी सब्ट्रैक्ट 7. अगेन व्हाट वी ऑब्टेन वी सब्ट्रैक्ट 9, 11, 13, 15. कहां तक करना है? टिल वी ऑब्टेन 0. स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर 0 नहीं आया आपका लास्ट में तो आपको याद रखना है कि कहीं पे आपने सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ किया है. तो दिस नंबर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर? तो हमने कितने स्टेप्स किए? स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. देयर आर टोटल 9 स्टेप्स टू ऑब्टेन 0. सो द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 9. अगर टोटल 11 स्टेप्स होते हैं, सो द सब्ट्रैक्शन दैट इज द स्क्वायर रूट इज 11. अगर 5 स्टेप किए होते तो द स्क्वायर रूट इज 5. So I'll give you few sums to do as a practice. 4, 4, 1. You can do this, and you can also do the practice of 2 to 5. These are the two sums you can do the practice and find out that these two numbers are the square root of which numbers, or square root of the given number. Let's do the sum of question 3 on the basis of repeated subtraction method. We have to find out the square root of the given number. So students, as we discussed earlier, the given number will start subtracting 1, that is from the first odd number. फिर जो आंसर आया that we will subtract next odd number. So it comes 96. Then 96 minus 5, it comes 91. 91 minus 7, 84. 84 minus 9, it's 75. 75 minus 11. Students, you observe that I am subtracting the consecutive odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9, 11. So this is, you have to continue. आपको ये करते ही जाना है. हम कहां तक करेंगे ये subtraction? Correct. Till we obtain 0. So it is 51. 51 minus 15, 36. 36 minus 17, it's 19. 19 minus 19, that comes 0. So obviously we can say that the square root of the given number, कितने steps किए हमने? 10. So it must be the square root of 10. मतलब ये numbers आप अगर लिखोगे तो आपको square root लिखने में easy हो जाएगा.
So that is why you should write down this number 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें स्टेप काउंट करने में इजी हो जाएगा एंड वी कैन राइट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. It's 169. So we'll start subtracting 1. So it is 168. Then the next odd number. So it is 165. फिर odd number. Next it's 160. And so on we have to do. 160 minus 7. So 153. 153 minus 9. So it is 144. 144 minus 11. 133. 133 minus 13. 120. 120 minus 15. It's 105. 105 minus 17. 88. 88 minus 19. 69. 69 minus 21. It's 48. 48 minus 23. It's 25. And 25 minus 25. We will obtain 0. कितने steps किए हमने? 30. So we can say that square root of the given number is 30. So students, here will discuss one method to find out the square root, and the name of the method is repeated subtraction. मगर हमें पता है कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आया, so this method is quite long. So let's learn the new method.